So in our previous lecture we talked about the three-phase power, and we came to the conclusion that for a three-phase system, whether star connected or delta connected, so for star and delta connected system, we saw that the power that is consumed from by the load is 3 times Vp Ip into cos theta, where theta is the angle between voltages and current, and this theta is decided by the load which is connected to the three-phase supply. And as I told you that if the load is going to be purely resistive, in that case the voltage, the phase voltage and the phase current will be in phase. And if it is going to be inductive, so if the load is going to be inductive oriented, more inductive, then in that case you are going to have voltage leading the current. For capacitive load, the voltage will be lagging the current, and thus accordingly the theta will be decided. So we'll try to look into some examples today, and we'll observe that how theta and the power is affected when you have different loads connected to a three-phase system. But before that, there were a few more terms that were left in the previous lecture. So we were left with the average power, reactive power, and apparent power. So in fact, we studied these type of classification of power in one-phase system. The same thing applies here, but is valid for three-phase systems. So the average power per phase given by P of P for either the delta connected load or the star connected load is P by 3. So we are talking about balanced three-phase system. So in case of balanced three-phase system, we have power for three phase as 3 Vp Ip cos theta, which means that in a balanced three-phase system we'll be having the same power consumed, supplied, or stored in each of the phases same, which will be P by 3. While if somehow the load becomes unbalanced, or the three-phase system becomes unbalanced, in that case the power consumed in each phase will not be P by 3, rather something different, and that will have to be evaluated. So we are not going to talk about the unbalanced system, because this is a part that the students from electrical background will be studying in higher classes, in higher years. So the average power which is consumed per phase is given as Pp, which is equal to P by 3, and small p is Vp Ip cos theta. So if you divide P by 3, you get Pp as the average power as Vp Ip cos theta, while the reactive power per phase is given by Qp, which is Vp Ip sin theta. So in fact, if you remember, we talked about active, reactive, and apparent power in one phase system, and we saw that the apparent power was given as Vp Ip, simply the multiplication of voltage with the current. And if you used to multiply this apparent power by cos theta, you obtained the average power, the real power, and for obtaining the reactive power you had to multiply Sp by sin theta. So Sp can be written in terms of Pp and Qp, given by the expression below. So Sp is Pp plus j Qp, where Pp is the average power and Qp is the reactive power. And this can, if you look into the expressions for Pp and Qp, Vp Ip cos theta plus j Vp Ip sin theta. So this can be written, since cos theta plus j sin theta is 1. So we can write this as Vp Ip conjugate. Now where Vp Ip are the phase voltage and phase current with magnitudes Vp and Ip respectively. So in fact the bold letters represents the phase voltage, and the letters which are unbolded are representing the magnitudes. The total average power is the sum of the average powers in the phases. So suppose that you have three phases A, B, C, then the average power in A, the average power in B, and the average power in C, all sum together gives the total average power in the three-phase system. And since we are talking about balanced system, which means that in each of the phases the power is Pp equal, and thus the average power of the three-phase system will be 3 times Pp, which is 3 Vp Ip cos theta. Now we saw in case of a star connected system we had Vp, which was equal to Vl by root 3, or alternately we obtained an expression for star connected system Vl equal to root 3 Vp. So if we are going to substitute in place of Vp
as VL by root 3, while for the phase current in star connected system is equal to the line current. So we saw that line current and phase current in star were equal, and in place of IP we can write IL. So the expression that we are going to get for average power in a star connected system is root 3 VL IL cos theta. So this is the expression in terms of line voltages. Likewise, for delta connected system we had VP equal to VL, while there was a division in current, and that division was given by an expression IL equal to root 3 IP. So if we are going to substitute in place of IP equal to IL by root 3, so we get the same expression root 3 VL IL cos theta for delta connected system as well. Now for a star connected load, so now we talk about the load which is star connected. IL and IP will be equal, but VL is given as root 3 VP, while for delta connected load IL is root 3 IP, but VL is equal to VP. So this is something that I just told you, and thus the equation. So in fact this is taken from a book, and the previous equation was referred to as 12.5 in the book. So this can be written for delta and star connected loads, and the total reactive power is, so similar to the average power we obtained in the previous expression, the reactive power can be obtained as 3 Vp IP sin theta for balanced condition. So you always have to remember that these expressions where we are going to simply add all the three phase voltages and we write them as a multiplication of 3. So this 3 can only be multiplied if you are considering your load to be balanced or your three phase system to be balanced. In case of unbalancing, then you will have to separately evaluate or calculate the power that are being dropped in each phases, then you will have to sum them all. So Q is given as 3 Vp IP sin theta, or 3 times of Qp, which can be again written as root 3 VL IL sin theta for both delta and star connected balanced systems. The total complex power, so S is the apparent or complex power, which will be equal to 3 times the complex power in each phase, SP. This can be written as 3 Vp IP conjugate, or 3 IP square Zp. So if you are going to substitute in place of Vp as IP Zp, by Ohm's law we learned that Z is given as V by I. So V is written as Iz. So if we replace Vp by Iz, then what we are going to get is 3 times of IP multiplied by IP conjugate, which is IP square, multiplied by Zp. Or if we are going to substitute in place of IP conjugate, Vp by Zp conjugate. So the power can be written in terms of voltage as 3 Vp square upon Zp star or conjugate. So and Zp is written as Zp angle theta. So this is what we normally see in case of AC circuit, that impedances are written in terms of either polar form or Cartesian form. So there is always a component, an imaginary component, when we deal with AC circuits having inductance and capacitances. So Zp is the load impedance per phase. Zp could be Z star or Z delta depending upon whether the system is star connected or delta connected. Alternatively, the previous equation can be written as S equal to P plus JQ, and if we substitute the values of P and Q, so in terms of rectangular coordinate, what we are going to get is root 3 VL angle theta. Since we saw that in previous lecture the impedance is written in terms of Vp upon IP, and the angle difference between these two phasors, voltage and current, will provide us the angle of impedance theta, and thus the angle for the power S comes out to be theta. Now we talk about an example. So suppose that you're given a 3-phase motor which is connected as a star load. So 3-phase motor which is connected to a supply and is considered to be a load, since a 3-phase motor comprises of windings, and windings behave like inductive load. So you have the resistance of windings, a finite resistance will be there, and winding will be having
high values of inductance as well, and a very small amount of capacitance also exists. So a three-phase motor can be regarded as a balanced star load. A three-phase motor draws 5.6 kilowatt when the line voltage is 220. Now if you look into this question, we see that the term kilowatt is used for the unit of average power. So this is something that we also saw in case of one phase circuit, that the unit for average power or real power was watt, and that for the apparent power was VAR, volt ampere reactive. When the line voltage is 220 volt and the line current is 18.2 ampere. Sorry, VAR was the unit for Q. Apparent power was had the unit VA, simply VA, volt ampere. So reactive power was having the unit VAR, volt ampere reactive. So when the line voltage is given to this motor as 220 volt and the line current is 18.2 amperes, the power consumed by this is 5.6 kilowatt. So you'll have to determine the power factor of the motor, which is cos theta, or the angle that exists between voltage and current, and is the same angle which is used in order to compute the average and reactive power from the apparent power. So the apparent power is given by the expression root 3 VLIL, or simply VPIP. Since we have line voltage and line current given, and that is why we are going to use the expression of S in terms of VLIL. So S is written as root 3 220 is the line voltage, and the line current is 18.2, and thus the apparent power that we obtain is 6935.13 volt ampere. Now the real power is given as 5.6 kilowatt, 5600 watt, and the real power is written in terms of S as S cos theta, while the reactive power was written in terms of S as S sin theta. So P is equal to S cos theta and Q is equal to S sin theta. So here, since average power is given in the question, so we are going to use this value in order to evaluate theta, and we obtained the value of S as 6935.13 VA. So substituting the value of P and S in this expression will provide us the value of cos theta, which is power factor. So the power factor is cos theta equal to P by S. P is given, S is given, and we obtain cos theta as 0.8075. And if suppose that we were asked to evaluate the angle that exists between voltage and current, so using this power factor, you will have to simply take the cos inverse of 0.8075, and that would give you the value of angle that existed between voltage and current. And from that you can also conclude whether the load is either inductance oriented or capacitance oriented, or in other words, load is inductive or capacitive. Now suppose this is another example. So suppose that you have a balanced ABC sequence. Okay, please. Please ask question. Any doubt? जी 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 हाँ, देखिए ये जो cos थीटा आपने निकाला है ना, एक मिनट में बताता हूँ। थीटा को आप निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए cos इनवर्स ऑफ 0.807 क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू बता दी मुझे कैलकुलेटर यूज़ करके। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0.8075, ये वैल्यू बताइए। प्लस 36.14 डिग्री। ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये क्या है, आपने कहा कि Z इम्पिडेंस किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, Z एंगल
थीटा विच वॉज वी बाई वी पी बाई आई पी। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको देखा, ठीक है। अब अगर एंगल आप वीपी का एंगल 0 मान रहे हैं, आईपी का एंगल क्या होगा जी, -36, ठीक है। अगर वीपी को आप 36 मान रहे थे तो आईपी 0 हो जाता। फेज़र होता है, फेज़र में आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। हम वीपी को रेफरेंस मान ले रहे हैं आप जी। हाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास में अगर आप वीपी को रेफरेंस मान रहे हैं तो आईपी कहाँ पे आ रहा है, लैगिंग आ रहा है 36 डिग्री। लैगिंग किस केस में आता है, आई करंट इंडक्टर में। तो ये हाँ, इंडक्टेंस में जो है वोल्टेज लीड करता है करंट को। तो ये जो एग्जांपल है, यहाँ जो पावर फैक्टर आपने निकाला उससे अंदाज़ा ये हो गया कि ये लोड इंडक्टिव होगा, ठीक है। और मोटर इंडक्टिव होता ही है। ये बात समझ आ गई जी। तो वैसे तो एग्जांपल मोटर का नाम जब ले लिया तो मोटर से ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपका लोड इंडक्टिव होगा, ठीक है। नाउ सपोज दैट यू गिवन a balanced ABC sequence which is star connected, and the source value are given as VAN equal to 110 degree. So you're given the value of phase voltage of A phase का voltage दिया हुआ है VAN equal to 100 angle 10 degree, and since it is written that the sequence is balanced, which means that VBN and VCN will be having the same magnitude as that of VAN, but the angle will be 120 degree shifted from it. So VBN will be lagging VAN by 120 degree, which means it will be having an angle of 10 minus 120 degree, and VCN will be lagging by an angle of 240, which means that VCN will be written as 100 times angle 10 minus 240. So this sequence is connected to a delta balanced load. The star sequences, the source are connected as in a star fashion, and the load is connected as delta. Calculate the phase and line currents. So for this you'll have to use the figure. So let me draw the figure here. So they say that you have a star connected source. Let's say this represents the star connected sequence source, which is connected to delta load. So this is an example, and it says that the delta load values are given as 8 plus 4 J4 ohms per phase, and the value source is also known. So you are required to calculate the phase and line currents. So phase current is this one. Let's say this is IP. So we can write this is IAB between terminals A and B, and this is IL. So in fact, if you evaluate any one of this IP or IL, the other can be simply found by multiplying or dividing by √3. So first of all, what voltage exists between, let's say this is terminal A dash and this is terminal B dash. So what is the voltage that exists between terminal A dash and B dash? Look, the voltage that exists across A dash B dash, or the load connected across A dash B dash, is the voltage between terminals A and B. Agree? वोल्टेज किसका दिया हुआ है, वो सप्लाई, एक सप्लाई का दिया हुआ है, VAN का दिया हुआ है, VBN का दिया हुआ है, VCN का दिया हुआ है। तो अब VAB निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के टर्म्स, क्योंकि VAN फेज वोल्टेज है और VAB क्या है, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है,
√3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। जी, ये बात समझ आ रही है सबके? ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज निकालने के लिए आप फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको लाइन वोल्टेज का। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज कितना लीड करता है फेज वोल्टेज से, बाय हाउ मच? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितना लीड करता है? वी ए बी वी ए एन से कितने 30 डिग्री। वी ए एन का जितना भी एंगल है 10 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री और ऐड कर दिएगा, 40 डिग्री वी ए बी का आ जाएगा एंगल। अभी देखिए सॉल्यूशन लिखा है, द लोड इम्पिडेंस इज, अब लोड इम्पिडेंस इनका दिया हुआ है पर फेज 8+J4 जो डेल्टा में कनेक्टेड है। मैंने यहाँ लोड बनाया नहीं, आप लोग बना लीजिएगा, बना देता हूँ। चलिए, वी ए बी निकाल लिया आपने, ठीक है, ये लोड है अब। हाँ, तो Z डेल्टा दिया हुआ है, इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इफ़ द फेज वोल्टेज वी ए एन दिया हुआ है, देन द लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ वी ए एन, एंगल एक्सीड करेगा 30 डिग्री। ये 10 डिग्री है, तो वी ए एन की जगह सब्सटीट्यूट कर दिए 100 एंगल 10 मल्टीप्लाइड बाई √3 एंगल 30, तो 100 √3 एंगल सम हो जाएगा 10 + 30, ये आ गया लाइन वोल्टेज पोलर फॉर्म में 173.2 एंगल 40 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये कैपिटल ए बी इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये ए डैश की जगह इन्होंने कैपिटल ए बी लिखा हुआ होगा। जिस बुक ने इसको फिगर को बनाया है तो उन्होंने ए डैश नहीं लिया होगा, कैपिटल ए बी लिखा हुआ होगा, तो इसको कैपिटल ए बी कर लीजिए। हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? वी ए बी कैपिटल ए बी, वी कैपिटल ए बी, हाँ फेस करंट, जी जी, यहाँ तक क्लियर है ना? फेस करंट पे आता हूँ फिर। जी, तो अब फेस करंट की अगर बात करें, फेस करंट्स आर, हाँ देखिए, फेस करंट निकालना है आपको लोड साइड में। क्या होगा, फेस करंट कैसे निकालेंगे? ए बी का वोल्टेज आपको पता चल गया, इम्पिडेंस दिया हुआ है। भाई अगर आपके पास में एक इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस, मान लीजिए, अगर इम्पिडेंस समझ में नहीं आता है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, तो करंट कैसे निकालते हैं? V/R। तो अब मैं ये कहता हूँ कि इम्पिडेंस पे सारी वही प्रॉपर्टीज़ लगेंगी जो रेजिस्टेंस में लगती हैं, तो करंट कितना हो जाएगा? V/Z। तो फेज करंट ए बी के बीच में कितना आ गया? ये जो, हाँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपने निकाल लिया, ये 173.2 एंगल 40, और इसका इम्पिडेंस आप बता रहे हैं Z डेल्टा 8.944 एंगल 26.57, तो वी ए बी को डिवाइड कर दिए Z डेल्टा से, तो ए बी का करंट निकल आएगा 19.36 एंगल 13.43 डिग्रीज। जी, क्लियर? तो डेल्टा का जो अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप डेल्टा का फेज़र देखेंगे तो जब आप फेज़र डायग्राम बनाते हैं, IAB, IBC और ICA अगर आप बनाएंगे तो वो IBC 120 डिग्री लैगिंग आएगा, पीछे आता है डेल्टा में। IAB जो होगा ना, वो VAB के आसपास होगा। अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो बिल्कुल उसी के अलॉन्ग होगा, 0 डिग्री उनके बीच में डिफरेंस होगा IAB और VAB के बीच में, अगर प्योरली रेजिस्टिव है। अगर थोड़ा बहुत इंडक्टिव कैपेसिटिव होगा तो IAB VAB के आसपास होगा, लीडिंग या लैगिंग। और VBC और IBC आसपास होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर VAB से VBC 120 डिग्री लैग कर रहा है
तो आई ए बी से आई बी सी 120 डिग्री लैग करेगा। नहीं आई बात समझ में? चलिए मैं एक बार और फेजर से ही समझा देता हूँ। भाई अगर आपने डेल्टा के केस में वोल्टेज को आप कह रहे हैं वी ए बी रेफरेंस है, फिर आप ये कह रहे थे कि वी बी सी 120 डिग्री लैगिंग होगा और वी सी ए 240 डिग्री लैगिंग होगा वी ए बी से। आ गई? अगर हाँ, अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो करंट आई ए बी हो जाएगा ये प्योरली रेजिस्टिव के केस में। जी आई ए बी, जी जी। तो अब आई बी सी आपको दिया, आई ए बी को अगर आप रेफरेंस मानते हैं तो आई बी सी एंगल -120 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब क्योंकि बैलेंस्ड लोड है तो आई बी सी और आई सी ए के मैग्नीट्यूड भी सेम होगा जो आई ए बी का है, बस एंगल डिफरेंस होगा। आई सी ए में आप लिख सकते हैं आई ए बी +120 या फिर -240, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों से ही आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है जी जी। नहीं नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन सही देखिए, एंगल यही आएगा, एंगल में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा अच्छा, +120 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, आई तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आई बी सी तो लैगिंग हमेशा लैगिंग होगा 120 डिग्री। वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, वो फिर आप ए बी सी सीक्वेंस नहीं बचेगी, वो ए सी बी हो जाएगी। ए सी बी सीक्वेंस में आप +120 ले लीजिएगा अगर दिया हुआ वो सीक्वेंस। ठीक है चलिए, अब इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फेज एंड लाइन करंट्स। तो अभी क्या निकाल लिया हमने, फेज निकाल लिया। हाँ देखिए, अब लाइन करंट क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स फेज करंट। एंगल कितना होता है डिफरेंस, कितना लीडिंग करता है लाइन करंट फेज से डेल्टा में, 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आई लाइन करंट निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, लैगिंग है भाई 30। अब डेल्टा का फेज़र आप देख लीजिएगा। मुझे अब यही तो है, मैंने पता नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने शायद ये कह दिया हुआ आपसे, आप देख लीजिएगा फेज़र उसका। तो देखा नहीं आप लोगों ने? नहीं, डेल्टा का अगर मैंने आप लोगों से खुद कहा था एनालिसिस करने के लिए, तो चलिए बहरहाल अब ये है कि जो लाइन करंट है डेल्टा के केस में, दैट विल बी 30 डिग्री लैगिंग द फेज वोल्टेज। तो आई ए बी मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड एंगल -30। आई ए बी की वैल्यू आपने निकाली हुई थी 19.36, एंगल 13.43। तो ये हो जाएगा, इवेल्यूएट कर लीजिएगा, तो ये आई ए मिल जाएगा 33.53, एंगल -16.57। जी मैग्नीट्यूड सेम होंगे, एंगल चेंज होगा बस। बैलेंस्ड है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेंगे, एंगल में फ़र्क आएगा 120 डिग्री। अब आई बी देखिए, यहाँ पे लाइन करंट हमने निकाला है तो 120 डिग्री आई ए से लैग कर रहा है, तो सिर्फ एंगल का फ़र्क आ गया, मैग्नीट्यूड सेम रहा, ऐसे ही आई सी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड हैविंग एन इम्पिडेंस given as 20 - j 15 ohms is connected to a delta connected positive sequence generator having VAB equal to 330 angle 0 degree। पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब ए बी सी सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस ए सी बी सीक्वेंस। कैलकुलेट द फेज करंट्स ऑफ द लोड एंड द लाइन करंट्स। तो इम्पिडेंस दिया हुआ है, डेल्टा लोड है आपके पास में, डेल्टा सोर्स है, उन दोनों कनेक्शंस को आप कर दीजिएगा, पर फेज आप इम्पिडेंस निकाल लिए जेड डेल्टा,
इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और वी ए बी क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड सोर्स है तो सोर्स और लोड साइड वोल्टेज सेम होगा डेल्टा के केस में। इसको भी बना लेते हैं। अब आपके पास में डेल्टा सोर्स है और डेल्टा लोड है। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल्स में जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है वही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो वी स्मॉल ए बी, अगर ये स्मॉल सोर्स साइड स्मॉल ए बी है, ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, तो वी कैपिटल ए बी इज इक्वल टू वी स्मॉल ए बी डेल्टा के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फेस करंट आप निकाल लीजिए। फेस करंट क्या हो जाएगा, कैपिटल वी ए बी डिवाइड बाई जेड डेल्टा, 13.2 एंगल 36.87 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए हो गया क्योंकि दोनों डेल्टा कनेक्टेड है। इसलिए जब आपके पास में दोनों डेल्टा कनेक्टेड हैं, सोर्स और लोड, या दोनों स्टार कनेक्टेड हैं, तो सोल्यूशन बहुत छोटा होगा, सिंपल होगा। लेकिन जब एक स्टार है दूसरा डेल्टा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि सोर्स स्टार कनेक्टेड था और लोड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लोड साइड में वोल्टेज कितना एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सोर्स डेल्टा कनेक्टेड है और लोड स्टार कनेक्टेड हो। फिर इसी तरीके से आई बी सी आप निकालेंगे, बैलेंस सिस्टम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंगल जो लैग करेगा या आएगा दैट विल बी -120 डिग्री, 36.87 -120 डिग्री -83.13। इसी तरीके से आई सी जी। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। अब पावर के कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए, एक मैंने डिस्कस किया है, और ये क्या आ गया, कैलकुलेट द फेज करंट्स एंड द ऑफ द लोड एंड द लाइन करंट्स। तो ये तो फेज करंट निकाला है, लाइन करंट इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। तो लाइन डेल्टा के केस में लाइन करंट ऑलवेज लैग्स द, जी पूछिए पूछिए जी। अच्छा जी जी, मैं बनाता हूँ, रुकिए। आप वी ए बी को रेफरेंस मानते हैं, वी ए बी, फिर इससे आप बनाते हैं 120 डिग्री लैगिंग वी बी सी, और फिर 120 वी बी सी से लैगिंग होता है वी सी ए। ठीक है, अब वी ए बी एंगल 0 पे है, करंट हमें मिला है 36.87 आई ए बी जी।